Hi guys, welcome to my channel. So, in today's video, we'll be trying out the very popular, very famous Korean face mask, which actually I wanted to try since a very long time. तो मेरा ये मन था कि मैं इसे ट्राई करूँ, यूज़ करके देखूँ और इसे फिल्म करने का भी बहुत मन था. तो let's do it today. Okay, so today we are going to try a DIY viral Korean face mask. So I'm going to tell you the recipe of this face mask. Okay, so first of all, I would like to give you a gist of the benefits of this face mask. कि इस फेस मास्क के क्या क्या बेनिफिट्स है. तो इसके पहला तो ये बेनिफिट है दैट इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. once you have applied it, you will find very much hydration on your face. So it's very hydrating for your face. Secondly, it's very soothing, calming for your face. It reduces any kind of inflammation on the face. Alright, and the third benefit is that it adds a very beautiful glow on your face. तो मेरा तो काफ़ी मन था इसको ट्राई करने का. सो आज हम लोग साथ में ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay guys, so coming to the recipe of this DIY Korean face mask. So इस face mask के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है एंड बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी. यू विल नीड ओनली 3 ingredients फॉर दिस फेस मास्क. ओके, सो आई एम गोना शो इट टू यू वन बाय वन कि आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रे विच आई हैव गॉट एंड इट हैज़ ऑल द ingredients विच यू वुड बी नीडिंग फॉर दिस फेस मास्क. So our ingredient number 1 is this. I hope you all can see it. Any guesses? क्या कोई guess कर सकता है कि what is this? So honestly write down in the comment section कि क्या हो सकता है. मैं तो बताने वाली हूँ but please honestly लिखिएगा. Okay, so this is actually rice. This is boiled rice which normal rice जो घर में बनता है. When once you have cooked the rice, so it's a cooked rice. Once you have cooked your rice, then you have to make a paste of this rice. So this is a rice paste. Okay, so you'll need a rice paste, which is ingredient number 1. Secondly, you will be needing honey. Okay, so आप कोई भी ब्रांड की हनी ले सकते हो. मैंने ये पतंजलि की हनी ली है. So second ingredient will be honey, and the third ingredient will be the aloe vera gel. Okay, so guys, यहाँ पे you can take a readily available ready-made aloe vera gel also, or you can extract it from the aloe vera plant. if you have aloe vera plant at your home तो आप उससे भी extract कर सकते हो. I think वो ज़्यादा better होगा. तो जो भी है as per your convenience. So you will need 3 things: rice paste, cooked rice paste, honey, and this aloe vera gel, and 1 spoon also. तो let's start कि इसे कैसे बनाते हैं. तो first of all you will take the rice paste. ठीक है, so you have to take it as per the quantity should be as per your face and neck. क्योंकि जब भी हम स्किन केयर करते हैं, never forget your neck. your neck is a part of your face. तो हम दोनों जगह फेस मास्क लगाएंगे. so मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइस पेस्ट ले लिया है. ठीक है, and now I'll be adding 1 tablespoon of honey into it. तो मैं इसमें 1 tablespoon of honey ऐड कर रही हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने आई एम शोइंग इट टू यू लाइक दिस. ठीक है, ये 1 tablespoon ऑफ हनी मैंने ले लिया है एंड आई एम 1 second एडिंग 1 tablespoon ऑफ हनी इनटू दिस. ठीक है, द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा जेल. ओके, सो half tablespoon of aloe vera gel I'm taking. आप चाहो तो 1 tablespoon भी ले सकते हो. तो इसमें क्या होता है कि the honey which we have added is having moisturizing properties. Everybody knows it that honey is very moisturizing, very soothing. Aloe vera gel is very cooling, and the rice paste which we have added, it adds a glow to your face, and it's also very hydrating. ठीक है, and it is a mild exfoliant also. तो एक थोड़ा exfoliation भी कर देगा. Now mix all these ingredients together. तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ. Nicely you have to mix all the ingredients together. Okay,
I'm mixing the ingredients. अच्छे से have to mix it. ठीक है, तो I have mixed all these ingredients together as you can see, and the paste now looks like this. थोड़ा सा ऐसा दिखता है, as you can see. Paste is looking like this. I can show you like this also. ठीक है, तो actually I'm really excited to try it कि ये है क्या यार. मतलब मैंने सब पेस्ट इज़ रेडी. मैंने इसे बहुत टाइम से देखा है ऑन द इंटरनेट, एवरीवन्स इंस्टाग्राम, एवरीवेयर ऑन यूट्यूब, दैट दिस इज़ अ वायरल कोरियन फेस मास्क, ये वो ब्ला ब्ला, एंड आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट. बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो फिल्म किया जाए और आज हम लोग सब इसको टेस्ट करेंगे दैट इज़ इट रियली वर्किंग और नॉट, इज़ इट रियली वर्थ द हाइप और नॉट. तो ये पेस्ट रेडी हो चुका है. ठीक है, नाउ आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई इट एंड देन शो इट टू यू. बट पेस्ट अप्लाई करने के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि वी नीड टू गेट इनटू सम ओल्ड टी शर्ट और सम ओल्ड पीजेस, क्योंकि भाई मैं अपने अच्छे कपड़े तो वी कांट स्पॉइल इट. I don't want to spoil it, so I'll quickly come back into my PJs and then I'll apply it and show it to you. Okay? Okay guys, I'm back. मैं वापस आ चुकी हूँ and I've changed into my comfy PJs, which if get spoil also then I have no tension. तो इसीलिए आप सबको ये एडवाइस है कि once you're trying out this face mask, once you're going to apply it, change into your old t-shirt or your comfy PJs, whichever is convenient for you. Okay, so मैंने अपना पूरा फेस वॉश कर लिया है, washed my face. So whenever you have to apply a face mask on your face, you need to apply it on a washed face and neck. ठीक है, there should be no makeup, there should be nothing on your face. So there is nothing on my face, so I'm going to apply this face mask. Also take care that your hands are washed. Your hands should also be washed before applying any mask or before doing any sort of skincare. तो I'll be applying this mask. So let's start. तो ये रहा mask and I'll start applying this mask. So I'm starting. Now, if you want, you can apply it using a brush also, but I really like to use my hands because they are very convenient for me and मुझे आदत है हाथों से फेस मास्क लगाने की. तो I'm just applying it. It feels nice. You have to apply it under everywhere. Okay. So मैं ये पूरा लगा करके I'll be coming back. Okay. So guys, as you can see that I have applied this face mask on my face as well as on my neck. Now one thing which I would like to mention here, that avoid your under eyes if your under eyes are very sensitive. Otherwise you can apply it, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत लगाया है, मुझे I'm okay with it. तो we have to see its results, और इसके रिजल्ट के लिए we have to wait 10 to 15 minutes. तो मैं 10 मिनट के लिए I'll wait and after 10 minutes we'll see what all it has done to our skin. So in the meanwhile, for 10 minutes I'll just chill with my orange juice actually. तो there's one more thing कि स्किन को एक्सटर्नल हाइड्रेट करना तो बहुत ज़रूरी है, इंटरनली हाइड्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दैट यू हैव टू टेक हाइड्रेंट्स लाइक ऑरेंज जूस, लेमन जूस एंड वाटर इज़ द बेस्ट हाइड्रेंट. तो इन द मीन वाइल मैं ये ऑरेंज जूस फिनिश करूँगी और तब तक ये ड्राई होगा. तो लेट्स मीट आफ्टर 10 minutes. So guys, it has been 10 minutes, so let me go and quickly wash it off. So I'll just be back. Hi guys, I'm back after washing my face and I can't describe this feeling. My skin feels utterly smooth, very very soft and very hydrated, or I think I can see the glow also. Let me see in close up. तो मुझे तो लग रहा है कि एक ग्लो भी आया है. What do you guys think? Comment down, is it glowing or not? क्योंकि
talking about how it feels really, really divine. And my skin feels so soft and hydrated. It's glowing very much. तो मेरी तरफ से तो it's approved. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. It's worth trying once. I think everyone should try it once. And do try it and do comment down that did it work for you or not, because for me it did work and I think it will work for everyone. तो आप भी इसे try करना and then tell me that how was your experience. So this was all about today's video और finally we tried the Korean DIY face mask जैसे मुझे बहुत लंबे टाइम से आप सबके साथ try करने का मन था. So today it was it, and I hope to see you all again soon. Or please like, share, subscribe to my channel, and hope to see you all soon. Bye bye.